This is the continuation of my previous episode. If you have not seen that video, then please watch that video first. The link is in the description. लेकिन अगर आप मेरे जैसे एक लेजी इंसान हो then no need to worry because I will start with the recap. तो चलो फिर कहानी शुरू करते हैं. On 2nd of March 2022, I embarked on a journey to Bangalore with my KTM Duke 250. I started my ride early in the morning and crossed the Ganga River. Then I continued on Kolkata-Chennai highway and the ride was smooth. And after a couple of Susupani break, I reached Balasore. होटल पहुंचते ही I took bath and ordered biryani, जो मैं regret किया next day. And talking about next day, as usual, I started early in the morning and covered few kilometers. Then I stopped for tea and I kept riding across Bhubaneswar. फिर क्या, जो होना था वही हुआ. Last night का जो बिरयानी था वो अपना काम दिखा दिया. So I had to make an emergency stop. Once I felt light as air, I continued straight and reached Srikakulum, Andhra Pradesh. And guess what? मैंने फिर से बिरयानी खाया. तो ये था अब तक की कहानी. अब आगे. सो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीकाकुलम. तो अभी ये सिटी उठने से पहले मैं ये सिटी को छोड़ देता हूँ. आज का जो डिस्टेंस है वो है 336 किलोमीटर. अराउंड 9 आवर्स लग सकता है. फॉग आ गया कहाँ से भाई? कुछ भी नहीं दिख रहा सामने का. सेला पास का याद आ गया मेरे को. ओवरलोड इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर दिस गाय. ये सामने ट्रक वाले को देखो. भाई साहब, I just stopped here to look at this beautiful hill area. हाईवे बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ माउंटेन्स है. But the problem is कि it's gonna be hot as hell soon. So before that happens, I need to make a move. बस और 300 किलोमीटर ही है इधर से. चलो, let's do it, bro. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look. ऑलराइट, वेलकम टू विजयवाड़ा. तो अभी मैं विजयवाड़ा में आ चुका हूँ, नहा धो के एकदम फ्रेश. आज तक ये जर्नी में जितना भी होटल मैंने बुक किया है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट. एंड डील भी मुझे अच्छा खासा मिल गया था मेक माई ट्रिप में, क्योंकि मैं हमेशा मेक माई ट्रिप से ही होटल बुक करता हूँ. तो आज मुझे स्पेशल ऑफ़र मिला था. होटल बहुत अच्छा है, पार्किंग वगैरह एकदम एक नंबर. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये प्रॉपर्टी जो है एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है. सो दैट इज़ ऑल आई वांटेड. बस अभी कुछ नहीं करना, अभी खाना है और सोना है, बिकॉज टुमारो आई हैव 700 किलोमीटर्स टू डू. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. I just got attacked by a bunch of bugs. पूरा वाइजर में एकदम क्या बताऊँ, कुछ दिख ही नहीं रहा था. So far I have ridden around 66 kilometers. 1 घंटे में कर लिया मैंने. तो ऐसे ही मैं एक घंटे में एक ब्रेक लिया करूँगा. Today is the final day. I have lot of kilometers to cover. This 700 kilometers will be little difficult. So let's see कैसे होता. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better,
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of Okay, so last 300 kilometers left. I have to say goodbye to this highway because this highway will go towards Chennai और मुझे जाना है Bangalore. Alright, so this is the ride that I have to take. अब सीधा जाओगे तो चेन्नई पहुंच जाओगे, लेकिन मुझे जाना है टुवर्ड्स तिरुपति. और ये जो रोड आप देख रहे हो ये ज्वाइन करेगा सीधा नेशनल हाईवे नंबर 75 जो कोल्लार होते हुए बेंगलोर जाएगा. यहाँ पर मुझे कोई शेड नहीं मिल रहा था तो आई जस्ट गॉट दिस साइन बोर्ड. अनदर 240 किलोमीटर्स लेफ्ट. 40 किलोमीटर बाद थोड़ा सा पेट्रोल और डालना पड़ेगा और बस उसके बाद सीधा अपना गड्डी घर. So it's almost 5:30. अब लास्ट 50 किलोमीटर्स लेफ्ट. अब उतना एनर्जी नहीं बचा कि शूट करूँ कुछ बताऊँ. It's been more than 12 hours since I've been riding. Bangalore traffic is waiting for me. I just wanna say thank you if you have made it till here, and if you haven't already then please consider subscribing, also sharing this channel and this video. That will boost my morale. तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में. I'll catch you in the next episode. Till then, peace out.